I'm a student class 10 SS 35 democracy and the meaning and the various form of the democracy. So we was talking about the essential condition for the success of democracy. Things may came to those who wait, but only the things it was left by those who hustle. And people used to leave only those chances. There hasn't a lot of progress, prosperity, and the possibility. And because in the case of the democracy, people used to choose their representative and vote. In the indirect democracy, people choose their representative and they go in the parliament and they make rules for the democratic party's authority. So, in 12th point, we are going to talk about the qualified and the fair staff system. The staffing system is the import. The policy is made by the public representative in the democracy. As you know, that we have a different forms and different mind statistics of the peoples. So we often have a lot of political parties in the democracy. Why? Because they think as other people thinks, not as usual as you are. So the policy made by you public representative in the democracy for the success of the democracy, it is very essential, or it is essential that the employees should be efficient enough, not only in their work but also in the service of the public. So the staff in the democracy who is going to serve you, or who is going to lead all the rules, the regulations, the law, the implementations, and how it would be work, he or she must be well qualified and well educated. So they should always remain the neutral. They should not impose or they should not influence the political power. So it is very essential for the bureaucracy especially. They should always remain the neutral and the fair regarding the party politics. So the party politics, it means a specific party want to execute some policies or the law, or other party is do not want to impose or do not want to implement that. So the bureaucracy or the people or the well qualified and the fair staffing system should not get influence from the oppositions. Clear? So now the healthy and the well organized party system. In the practice democracy is the party system. The success of the democracy depend on the politics, programs, and the loyalty of the political party. So it is very essential for the every political party to work with the loyalty. So because you are the representative of the people choose you to do what they want to do in the nations, and all the things of the democracy is only depend on the welfare of the people or publics who choose them. Or the representative are the very important part of the politics or the democracy. In the practice democracy is the party system that success democracy depend on the politics and on the policies, programs, and the loyalty of the political party. Political party must be loyal. So it is must be loyal. It is necessary for the success of the democracy. It is very necessary for the success of the democracy that the formation of the political party, how political party become a party. Here, so the formation of the political party is based on the healthy ground. It should not be a conflict with the party which is in the rule. It should not be based on the conflict. It should not just based on the against the oppositions. It should not based on the just like a quarreling with each other or amongst each other. So it is necessary for the success of the democracy, for the formation, the political is based on the healthy ground. And so their organization should not be based on the region, language, and the community. The organization should not be the based. जो organization है, जो संस्था है, वो based नहीं होनी चाहिए. किसके ऊपर? It should not based on the
रीजन, किसी भी स्पेसिफिक रीजन, क्षेत्र विशेष पर ही आधारित नहीं होनी चाहिए। उस पॉलिटिकल पार्टी का एम केवल ये ही नहीं होना चाहिए कि यही स्पेसिफिक क्षेत्र है जिसको हमें डेवलप करना है, बस यही हमारा गोल है, वी आर द नेशन, ये हमारा गोल नहीं है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सो उनका बेस ये नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट, द बेस मस्ट नॉट on the base of the religion and the language, और जो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, जैसे बंगला है तो अगर बंगाली लोग अगर स्पेसिफिक इस लैंग्वेज को बोलते हैं तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी उनको ही सपोर्ट करे जो केवल बंगला भाषा को जानते हैं और वे केवल उनको ही अपना लोग माने, और उनके बेस पर एक पार्टी को बनाया जाए जो पार्टी केवल उन लोगों के हित में सोचे जो कि स्पेसिफिक लैंग्वेज से कनेक्टेड है। देन ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। एंड दिस इज द एथिक्स, क्लियर। सो एंड द कम्युनिटी, और कोई समुदाय विशेष किसी स्पेसिफिक जो है वो समुदाय को लेकर हम कोई पार्टी नहीं बना सकते। इट मीन्स वी कैन नॉट फोकस ऑन द लिमिटेड पर्सन्स और द लिमिटेड पीपल्स। इफ यू आर in a political party, then you have to think about whole nation. Accepting to only language, regions, and only community-based political party cannot be successful in the democracy. Clear? So the organization should not be based on the region, language, and the community. Should be based on the national ground. Switches mean the formation of the political party should be focused on the economic and the political problem of the national level. जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो विल पावर है वो सारी की सारी जो है वो अपने नेशन के प्रति होनी चाहिए। क्लियर? सो दे मस्ट और दे शुड, एट फर्स्ट मस्ट एंड सेकंड इज शुड, दे शुड ओनली थिंक अबाउट द नेशन, the nation's problem, what the problem nations is facing off, and how that political party can give a new idea or something else which is in the plus point with the nations. It should based on national ground, which means that the formation of the political party should be focused on the economic and the economic. At first the economic, and second is the political problem of the national level. नेशनल लेवल की इकोनॉमिक्स और नेशनल लेवल की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का गोल होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी अ काइंड ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन द स्टीयरिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड द इंटरनल इलेक्शन इन द पार्टी शुड बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वे अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, और क्योंकि पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर पार्टी भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे नेशनल में तो डेमोक्रेसी है पर कोई स्पेसिफिक पार्टी है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं। उस पार्टी के अंदर जो है वो हमेशा एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा, या प्रेसिडेंट मस्ट बी फॉर वेरी लॉन्ग time. It should not possible. So it is not possible for in the case of the democracy, and if happens in a specific party, it means that party is not belongs to the democracy. So internal election in the party should be held from the time to time. They should not make the defectors or the indisciplined people as their members. Yeah. So that the eligible and the loyal politicians, it means the योग्य और निष्ठावान जो है वो राजनेता होने चाहिए। तो योग्य होने चाहिए, इट इज वेरी एसेंशियल। एलिजिबल, क्लियर, एंड देन लॉयल, और वे जो है वो राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए, देश के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है कि आपने अपने इंडिविजुअल्स, निजी स्वार्थों को छोड़कर आपने देश की सेवा के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। ये मोटो होता है पॉलिटिक्स का। ग्राउंड बेस पर क्या होता है, इट इज अदर थिंग, पर ये मोटो होता है। क्लियर? द एलिजिबल एंड द इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन हु kept the loyalty in the democracy are the essential for the success of the democracy. जो डेमोक्रेसी में निष्ठा रखते हैं, जो राष्ट्र में निष्ठा रखते हैं, ऐसे राजनेता ही डेमोक्रेसी को
आगे ले जा सकते हैं और डेमोक्रेसी के थ्रू ऐसा शासन कर सकते हैं जिससे कि डेमोक्रेसी अपने रियल फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड हो सके। क्लियर? सो the success and of the democracy, such politicians are able to find peaceful and democratic solutions to the national problem. ऐसे ही व्यक्ति जो है वो डेमोक्रेसी की नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी हिस्सेदारी या जिम्मेदारी निभा सकते हैं। Only because why? Because they are eligible and they are loyal to the nation and to the democracy. Clear? And if the politicians are the corrupt or the opportunistic, and the liars to take glory of the power and provide illegal profit to the supporters and also interrogate with the massive motions, and then they would always convert the democracy into the autocracy in such the situation crisis of the leadership emergency for the country. अगर राजनेता जो है वो लालची है, अपना स्वयं के हित को चाहने वाले व्यक्ति का फायदा करे, या वो ऊपर से तो ये प्रिटेंड करे कि he is in the favor of the democracy, बट अंदर से उसकी विचारधारा या उसकी जो थॉट है वो डेमोक्रेसी के अपोजिट हो या उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो ऐसे राजनेता जो है वो डेमोक्रेसी को खतरे में डालते हैं। So the next point is the national plan for the political interest. सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, ठीक है। In the developing world, it is essential for the success of the democracy. The national plans are made by the government, which is the steady development of the agricultural and the trade. It is very essential in the democracy. The democratic party who is in the rule should make the plans to enhance the power of the agriculture, national agriculture and the national trade. Trade means आप ट्रेड को व्यापार कह सकते हैं, ट्रेड को लेन देन कह सकते हैं, किसी भी तरह का व्यापार जिससे कि नेशनल इनकम के अंदर जीडीपी के अंदर ग्रोथ होती है, वो एसेंशियल है ऐसे प्लान को बनाना। एंड न्यू थिंग शुड बी इम्प्लीमेंट एवरी ईयर्स एंड टाइम बाय टाइम। And on the other hand, such plans increase the national income and are helpful in the rising the living standard of the weaker sections. अब अगर राष्ट्रीय आय अगर अधिक होती है तो इससे क्या फायदा होता है? राष्ट्रीय आय के अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी, पर पर्सन इनकम जो है वो भी ज्यादा होगी। इससे क्या होगा? देश के अंदर गरीबी की जो मात्रा है, गरीबी की जो संख्या है, जो गरीबी का जो वास्ट अभी जो हम रिसेंटली देख रहे हैं, जो वास्ट द स्प्रेडेशंस है वो कम हो जाएगा। कम होगी, पर पर्सन इनकम इज वेरी एसेंशियल पॉइंट इफ यू वांट टू ग्रो एवरी पर्सन। क्लियर? सो हेल्पफुल टू द राइजिंग एंड द लिविंग स्टैंडर्ड, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो। Now the national concessions on the basic issues, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। आधारभूत मामले फंडामेंटल अगर कोई केसेस होते हैं तो उसमें हम सबकी सारी पार्टीज की जो है वो सहमति होनी चाहिए। द कंसेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द इशू अमंग्स द पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली इन द पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन? व्हाई इज बीजेपी, कांग्रेस, जेडीपी एटसेट्रा एटसेट्रा? क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। वे ये चाहते हैं कि इस विचारधारा के साथ में अगर शासन किया जाए तो देश को हम ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा अलग है, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की विचारधारा अलग अलग होती है, परंतु जब बात सार्वजनिक हित की आती है, जब बात नेशनल वेलफेयर की आती है, तो हमें क्या होना चाहिए? बेसिक इश्यूज के प्रति हमें एक होना चाहिए। So the consistency of the basic issues amongst the political parties, majority classes is very essential for the success of the democracy. Democracy के लिए बहुत ज़्यादा essential है। The important points we would just remind you later, because it is just revision of the letter. So in the next class you should prepare on the Thursday
for the question and answer. Okay.